Now next example, in example 5, we have to find mean deviation about median. Okay, so first of all, I'm writing all the observations which are given to you. Xi is given 3, 6. It is in ascending order. Doesn't matter. If it is not given as order, first of all, you arrange it in ascending order for finding the median. This is very important thing, okay? To find the median in discrete series. Okay, सबसे पहले you have to arrange the data xi in ascending order if it is not given. Okay? So here 3, 6, 9, 12. Okay, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, and then we have 22. Okay, these are the values of xi, and fi's are given. The value of fi is given 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3. These are the values of fi. Okay, so if we find the median, first of all we have to find CF, cumulative frequency. We have to find the cumulative frequency. You all know we have to find the CF, the cumulative frequency, and we all know how to find the cumulative frequency. कैसे लिखते हैं? पहले यहाँ 3 लिखते हैं, फिर 3 में भी add the 4, get 7, फिर 7 में भी add the 5, you will get here 12. Then in 12 you add the 2, you get 14. This thing we have done in 9th class, okay? In 10th class also. Then 14 plus 4, 6, 18. Then 18 plus 5, 23. Then 23 plus 4, 27. And then 27 plus 3, 30. आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपने करेक्ट किया है? This should be equal to, okay, this thing should be equal to the sum of frequency. And when you add the frequency, you get the 30 here. So here n is 30. ठीक है, पहले मैं आपको मीडियन निकालना सिखा, ठीक है? आपको फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है. 3 एज इट इज, 3 एट 4 7, 7 एट 5 12, 12 में 4 2 ऐड किया 14, 14 एट 4 18, एंड सो ऑन 13. नाउ यू गो थ्रू दिस n. ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू दिस n and observe whether it is even or the odd. ठीक है, इसको देखना है मीडियन फाइंड करना. So here n is given 30 and which is an odd number, sorry, even number. ठीक है, so आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी मीडियन होगा, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम we are finding for the ungrouped data. So median will be equal to n by 2th observation ठीक है, n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation, and this is divided by 2. ठीक है, it means 15th observation, देखो n कितना है आपका, n 30, 30 by 2 कितना हो गया 15. So 15th observation plus हो जाएगा आपका 16th observation divided by 2. Now how you will get the 15th observation? बता, इसमें बहुत important. You go through the frequencies, see a cumulative frequency, and observe whether 15 or 16 you are getting here. You are not getting 15 or 16. So a value just greater than the 15 and 16, that is 18.
है ना, 15 नहीं मिला आपको, 16 नहीं मिला, एंड द वैल्यू जस्ट अबव द 15, 16 इज 18, और 18 के रिस्पेक्ट में आप xi की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। 18 के रिस्पेक्ट में यू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ xi, दैट इज 13 इन दिस केस, और 16 भी इसी ग्रुप में आएगा क्योंकि 16 भी नजर नहीं आ रहा। सो द 15th ऑब्जर्वेशन here is 13 and the 16th observation is again 13. So 13 plus 13 upon 2, 26 by 2. So here the median is 13. फिर से बता रही हूँ, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आती है, यू वी गो थ्रू द CF, अगर 15 आता, 15 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं xi का क्या वैल्यू, but you are not getting 15, so you observe the value just greater than the 15, that is 18 in this case, okay, and 18 के respect में the value of xi are 13 and 13, so the median जो आएगा आपका, median will be equal to 30, ठीक है। note down up to this, then I come to the median, mean deviations about median, हो गया बेटा, ये नोट डाउन कर लिया, ओके। चलो अब आते हैं हम वापस अपने टेबल पे, हाँ अब आते हैं वापस में टेबल पे, और हम फाइंड करते हैं डेविएशंस, ठीक है। जस्ट वेट, चलो वी आर फाइंडिंग द डेविएशन नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड xi माइनस x बार, ठीक है, सॉरी m हियर नॉट बार, मीडियन, ठीक है। हाउ विल डू, 3 में से हम मीडियन को माइनस कर देंगे, xi is 3, make one more column, minus median is 13 है ना, so you'll get here 10, okay, you'll get here 10, then 6 minus 13, you will get here 7, okay, then 9 minus 13, 4, then 12 minus 13, you will get 1 here, then 13 minus 13, 0, then 15 minus 13, 2, then 21 minus 13, 8 you will get here, and last क्या देखिए आपका 22, you will get 9, ठीक है। हमने सारी डेविएशंस फाइंड कर दी, ओके, वी आर फाइंडिंग ऑल द डेविएशंस, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, multiply these deviations with fi, okay, so next column fi multiply with these deviations, so we are multiplying 3 into 10 we get 30 here, okay, 4 into 7 28, 5 into 4 20, 2 into 1 2, 4 into 0 0, 5 into 2 will get 10 here, 4 into 8 20, and 3 into 9 27, okay, these all are the value when you multiply fi with the xi minus m, okay. Now what we'll do, we will add all these deviations, okay, we are adding all these deviations, summation fi xi minus m, so when you add all these deviation you will get here 149, okay, what you get on adding this deviation, 149. Now we apply the formula of finding mean deviation about median. So what is the formula? Mean deviation about median. This is equal to summation 32 not 20. Sorry.
32 will come here. This is 8 fours are okay. So mean deviation about median will be equal to summation fi xi minus m, okay, upon n. So what is the sum of this deviation? 149, okay, and n is given 30. So 149 upon 30, and it will be equal to 4, 3 से बजाएगा 4.97, okay. So it will be equal to 4.97. So that's all for the mean deviation about mean and एक बार देख लो जिसने लिखा mean deviation about mean and median of discrete frequency distribution, ठीक है. अब जो आपका ओनली लेफ्ट टॉपिक है इसमें इस एक्सरसाइज में दैट इज मीन डेविएशन अबाउट